Good morning, students. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. C and D both divisions can see the screen and can listen me. Can you see the Yes, sir. screen? Can you listen me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. We will wait for 2 minutes and then we will start. In that time, I had given you one homework. So let us see how many of you have completed it. Aditya Shinde and Siddesh, you have to rename yourself like what your friend has done. Then 466, Sujal Tamne, you have to rename yourself. Just like what your friends have done, you have to rename like yourself. Then D division. In the D division, Aditya Rasal, Aishwarya Sangve, you have not done your homework. Many are there. DM, Harshal, Prachi, Rohit, Sakshi, Soham. Okay, let it be. चलो 32 यहाँ पे कितना है 36. Okay, let us start. ठीक है. See, yesterday we had discussed about this particular subject, isn't it? And I think I have cleared all the points from the examination point of view, from the credits point of view. In case if you have doubt, you can ask me right now. इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप. Good. Okay, ठीक है. Along with this particular subject, I am going to teach you this particular subject. That is nothing but the workshop. Okay, so for workshop, no theory is there, but only practical sessions are there. ठीक है ना? So for practical sessions, let us see. Let us hope that you will join college offline. Then we can resume this practical. Otherwise, just like our SME practicals, we will be completing workshop practicals too. And for that, we will be having practical examination or other practical marks we will be assigning you for 25 marks. And for the same, you are going to earn 1 credit if you score minimum marks. Okay, na? So this is again for the workshop. Now we will move to the our subject, that is nothing but the SME. Okay, तो ये सिस्टम एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं.
So as we discussed yesterday, examination pattern in semester for 30 marks, end semester for 70 marks. Syllabus for in semester is unit number 1 and unit number 2. Tentative dates are it will be in the third or fourth week of the January. Star mark is there whether a university is going to conduct or we are going to conduct as in college. So that is still question mark is there. So let us be prepared for both. Okay. Then end semester examination, whether it is again one more star mark is there whether it will be online offline. That is also question mark. We don't have answer for this right now. Okay. Then for end semester examination, tentatively it will be in the month of May or April or May. Okay na? And the syllabus for the same will be unit number 4, unit number 3, 4, 5, 6. Mode of examination, question mark, whether it is online or offline, but it will be for 70 marks. For the passing, you need, there are two conditions. Minimum, you have to score 28 marks in the end semester examination out of 70, and together in semester as well as in end semester you must score 40 marks together. Okay. So that is the passing criteria for this particular thing. Now one major thing, see, for this you have 25 marks, so passing for this is again 10 marks. So if you score less than 10 marks you will be failed in the practical sessions. Okay. Now for any sort of an subject, for any sort of an what we can say practical, uh, we do have some course objectives and we do have some course outcomes. So let us discuss what are our objectives. So very first, to identify the sources of energy and their convergence. So in this particular rather our each objective and each outcome is dependent on our unit. So basically this first course objective is for the unit number 1, and this course outcome is also basically for unit number 1. So uh, once we go through the unit number 1, what will be the our outcome? So we will be able to describe, and we will be able to compare the conversion of energy from the renewable and non-renewable energy sources. Okay? So that is the outcome from the first unit. Then from the second unit, our objectives are for the second unit is to explain the basic concepts of engineering thermodynamics and its application. Moreover, uh, uh, this part you might have studied in your say what 11th 12th. ओके. तो ये आपका जो कुछ पोर्शन है जो 11th 12th में आपका कवर हो चुका है. Again we are going to revise it and its application, that is what basically we are interested in. So that is what we will be discussing in depth in this particular unit. ठीक है ना? So once we go through the unit number 2, what will be our outcome? Our outcome will be we will be able to explain the basic laws of the thermodynamics. I think this is what you might have studied in 11th and 12th, the basic laws of thermodynamics. Which laws of thermodynamics you have studied in 11th and 12th? Can you tell me? Law of equilibrium. Law of equilibrium. Okay. And what it is? Am I audible to everybody? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. 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 Sir, law of conservation of energy. One law you might have studied, law of conservation of energy. First, yeah, But first one. yeah, but prior to that, see, whenever I am asking any question, na, so a lot of yes sir, no sir are coming. So what we will do, we will assign 2 members from each division.
So from D division one member, from C division one member, they will be replying to me whether if I am asking question for sound or picture. ठीक है ना? तो जो भी मैं अगर पूछूंगा कि आवाज आ रही है नहीं, तो वो लोग रिप्लाई करेंगे, बाकी लोगों को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा कि टेल मी दी व्हाट आर द लॉज ऑफ एनर्जी यू हैव स्टडीड इन 11th एंड 12th, तो आप कोई भी अनम्यूट करके आप जवाब दे सकते हो। बट फॉर विजिबिलिटी एंड ऑडियो मीन्स ऑडियो एंड वीडियो हम लोग एक डिसाइड करते हैं, वो बंदा ही आंसर देगा। सो फ्रॉम डी डिविजन, आदित्य रसाल, आर यू देयर आदित्य? Yes, sir. हाँ, so you have to reply if I am asking for audio and video. ठीक है, you will be replying for audio and video. Then from just a minute. Then from C division, Aniket Palle, are you there? Aniket, Yes, sir. okay. So you will be replying when I am asking any question for audio and video. Okay, you only will be replying. Yes, sir. Sure. ओके बाकी कोई भी रिप्लाई नहीं करेंगे, ये दो बंदे रिप्लाई करेंगे ऑडियो वीडियो के रिलेटेड कुछ अगर मैं पूछ रहा हूँ तो। ठीक है, फॉर एनी अदर क्वेश्चन, फॉर एनी अदर यूअर डाउट, आप इमीडिएटली अनम्यूट हो सकते हो और मुझे वो सवाल पूछ सकते हो। ठीक है ना? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपने किसी ने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देन माइट बी यू हैव स्टडीड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ। ठीक है ना? तो ये सारे लॉज आपने 11th 12th में डिस्कस किए हैं, पढ़े हैं। सो अगेन वी विल बी डिस्कसिंग इट, बट व्हाट वी कैन से इट्स एप्लीकेशन यू माइट नॉट हैव स्टडीड इन डेप्थ। ठीक है ना? अच्छा ये अभी डी बिल्डिंग डी वाले कितने हैं अभी? 52 है। ठीक है, तो applications of the thermodynamics that we are going to discuss. Then heat transfer, what exactly heat transfer is and its applications, again we are going to discuss in the second unit. Then in the third unit we will be discussing the most favorite topic of you people, that is the vehicles. Okay, automobile vehicles, that is what we are going to discuss. So 3 and 4 यूनिट ये बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट रहता है मोस्टली आप लोगों का, क्योंकि ये आप डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, वेदर इट इज टू व्हीलर, फोर व्हीलर और एनीथिंग एल्स, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द यूनिट नंबर 3। बेसिकली यूनिट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस ऑफ द व्हीकल। ओके, देन once we go through the this unit number 3, what will be our outcome? Then we will be able to list down the various types of road vehicles and their specifications. तो रोड के ऊपर चलने वाले जो भी व्हीकल्स है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उनके स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग। यस, any doubt is there? Otherwise you can Kailas. Okay, then in the fourth unit we will be discussing the various systems which are there in the vehicle. तो कोई भी ऑटोमोबाइल व्हीकल या टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, उसमें कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं वो जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। once we go through it, we will be able to what we can say understand what exactly the different parts that a vehicle system has and what is its working. अच्छा, एक किसी ने तो भी हैंड रेस किया है। यस, Oppo A31, you can ask your question. सी रेज हैंड करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देन if we discuss the fifth unit, then different manufacturing processes we are going to discuss. कोई भी प्रोडक्ट आप देख लो, आपके इर्द गिर्द जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, चेयर है, देन टेबल्स है, मशीन्स है अलग अलग, तो वो किस मैन्युफैक्चरिंग मेथड से हम लोग
मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन द यूनिट नंबर 5. ठीक है. देन इन यूनिट नंबर 6, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. पर्सनली दिस इज माय फेवरेट यूनिट. व्हाट आर द different domestic appliances which we use, ठीक है ना, and what are the different mechanisms which are there in those domestic appliances. Can anyone tell what are the basic domestic appliances we use in our day-to-day life? Can anyone tell? Lights, TV. Lights and TV. Okay. इसके अलावा और कुछ? मोबाइल, वेरी फेवरेट. अजून? Computers. कॉम्प्युटर, व्हेरी गुड. रेफ्रिजरेटर, परफेक्ट. आणखीन? Mixer grinder. मिक्सर ग्राइंडर, Sir, वेरी गुड. solar products. सोलर प्रोडक्ट्स, वेरी गुड. Sir, microwave. माइक्रोवेव, गुड. Air Sir, conditioner. fridge. फैन, इन्वर्टर, heater. फ्रिज, वाटर हीटर, परफेक्ट, वेरी गुड. आणखीन? Sir, air conditioner. एयर कंडीशनर, मोबाइल चार्जर, वेरी गुड. और? Laptop computer. लैपटॉप कंप्यूटर, गुड गुड गुड. सी, Sound system. सॉरी, साउंड सिस्टम. ओके. Sound system, yeah. Okay. So yes, we do all use these all appliances. So इनमें से कुछ appliances जो है, that is what we are going to discuss in the unit number 6. और उनमें कौन कौन सा mechanism है, वो कैसे काम करता है, that is what we are basically interested in. ठीक है ना. बहुत मजा आएगा अगर ये यूनिट हम लोग पढ़ पाते हैं, तो बहुत मजा आएगा. ठीक है. ये काफी इंटरेस्टिंग भी है. मोस्टली यूनिट नंबर 3 एंड 4 के बाद ये वाला यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है. तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट आवर कोर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कोर्स आउटकम्स. आफ्टर दिस, हाँ, दिस इज व्हाट इज दिस सिलेबस. ओके. तो सिलेबस में जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, वी डू हैव यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 6, 6 यूनिट्स होते हैं. ओके. तो वो 6 यूनिट हर सब्जेक्ट के लिए आपको रहेंगे. तो फॉर द फर्स्ट वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी सोर्सेस एंड इट्स कन्वर्जन. ठीक है. तो आज तक आपने बहुत से एनर्जी सोर्सेस डिस्कस किए हैं. ठीक है. तो उन एनर्जी सोर्सेस को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाट बेसिकली आवर इंटेंशन विल बी इन दिस पर्टिकुलर unit. Or this unit number 1 is divided in 2 parts. Very first is energy generating devices. ठीक है ना. तो वो एनर्जी हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं और उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, दैट इज व्हाट आवर पार्ट 1 इज. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो इसमें आपको पता है कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के कौन कौन से डिवाइसेस है, या फिर कौन कौन से सोर्सेस है. तो थर्मल एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, न्यूक्लियर, सोलर, जियोथर्मल, विंड, हाइड्रोजन, बायोमास, टाइडल. So these are the different sources of energy from which we can convert that energy into the electricity. Okay, so those things we are going to discuss. उसके बाद simple numericals will be there, which will be based on the thermal power plant and its efficiency calculations. तो वो numericals भी हम लोग discuss करेंगे. This is all is about in the part 1 of the unit 1. Then once we have different devices, okay, जैसे कुछ devices हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. ठीक है. तो वो devices में एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है, that is what we will be discussing in part 2 of unit number 1. तो very first well known device is this pump. कभी देखा आपने पंप, कहाँ पे देखा है बताओ मुझे. So can you please repeat? Where you have seen pump. So hand pump or the Sir, hello.
यस यस यू कैन गो. वो फार्मर वाला पंप क्या? हाँ, फार्मर स्प्रेयर. farmer sprayer. Okay, good. Hand pump, one answer was. Another pump, Water pump. water pump. Very good. Anything else? पेट्रोल पंप. यस, वेरी गुड. सो ये पंप जो नाम है, तो वो एग्जैक्टली क्यों है, और वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है, एनर्जी कन्वर्जन कैसे करता है, दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग. देन कंप्रेसर, टर्बाइंस, विंड मिल्स, तो ये सारे एनर्जी को कन्वर्ट कैसे करते हैं, दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर सेकंड पार्ट. देन few simple numericals we will be discussing, which will be based on the power and efficiency calculations of these particular products. तो part 2 में अभी हमें numerical देखना है. Okay, then introduction in the second unit we will be discussing the introduction to the various thermal engineering devices or rather thermal engineering. ठीक है, तो उसमें सबसे फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो हम लोग पहले देखेंगे. उसके बाद जो बेसिक 3 डिवाइसेस है, हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन डेप्थ. एंड उसी के ऊपर का कुछ न्यूमेरिकल्स है, दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग. तो सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, देन फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिट नंबर 2. देन second part is this. Okay, in which we will be discussing the heat transfer. तो heat transfer कैसे होता है, that is what we will be discussing. So it is conduction, convection and radiation. Basically we have these three what we can say modes of heat transfer, and different laws which are associated with these three modes. That is what we will be discussing. And again the simple numericals which are based on the these heat transfer. ठीक है, that is what we will be discussing. Then part C of this particular unit, again which is the most interesting topic of this particular unit, and which will be the foundation for next 2 units. तो unit number 3 and unit number 4, उसका जो basic foundation है, that is what is the part C, which is the 2-stroke and 4-stroke engine. तो डे टू डे हम लोग बाइक चलाते हैं, फोर व्हीलर हम लोग चलाते हैं, बस से ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना, ट्रक से ट्रैवल करते हैं. तो वो कैसे काम करता है, ओके, तो दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग. उनमें भी 2-स्ट्रोक 4-स्ट्रोक में भी पेट्रोल इंजन होता है, डीजल होता है, सीएनजी होता है, एलपीजी होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन होता है. तो वो कैसे काम करता है, that is what we will be discussing. Okay, then there are different steam generators. Okay, तो ये steam generator क्या काम करता है और किस लिए यूज करते हैं हम लोग, that is what we will be discussing in unit number 2. ठीक है, then in unit number 3, अभी ये हम लोग unit number 1 and 2 स्पेसिफिकली देखेंगे कि क्या है exactly, because it will be there for your in semester examination. So roughly we will see for the next 3 units. In unit number 3, basically vehicles and their specifications we are going to discuss. First of all, let me know what do you understand by specifications. Specifications ये देख के या फिर ये शब्द सुन के आपको क्या समझ में आता है, बताइए. Various parts. ओके, various parts of vehicle. various parts of vehicles. ठीक है, see in material of your answer, whether ये आंसर करेक्ट है रॉन्ग है, I must say that you should start reacting. आपको जवाब देना है, ठीक है ना. देखो यहाँ पे सी डिवीजन में 68 स्टूडेंट्स है और डी डिवीजन में 55 स्टूडेंट्स है, बट आवाज़ें आ रही है 2-4 ही. ठीक है, इवन दो देयर इज एन कियोस, एक बंदा बात करने के बाद दूसरा बंदा बात कर सकता है, आपको जवाब दे सकते हो. रहने दो कि वो आंसर सही हो या गलत हो, कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोगों में ही रहेगा. ठीक है ना, तो बेशक गलत जवाब हो बट दो, डोंट हेजिटेट टू
व्हाट वी कैन से आंसर. ओके, तो जवाब देना. और व्हाट बेसिकली आई लाइक टू वे कॉन्वर्सेशन. ये एक प्रवचन की तरह नहीं होना चाहिए कि मैं ही यहाँ से बड़बड़ कर रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, किसी को नींद आ रही है, कोई टीवी देख रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई खाना खा रहा है. सो आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, आई विल नॉट आस्क यू टू स्विच ऑन योर व्हाट कैन से कैमरा. आपको जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, बट आंसर करो. मैं जब भी कुछ भी पूछ रहा हूँ तो आंसर करो. इट विल ऐड द वैल्यू. ये मजा आएगा, थोड़ा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन होगा तो मजा आएगा. ठीक है, सो टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेसिफिकेशंस. Materials. मटेरियल्स, गुड. Characteristics. डिटेलिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, Information. Clarification. clarification, more The information. features like horsepower, torque, maybe suspension and all. The features and Perfect. function of a vehicles. Features, production, definition, cost. Okay, good. So See, part modified or designed specifically for performing a specific task. design specifications, Auditing. auditing, Spares. spears. Okay, Detailing. detailing. Very good, very good. So I really appreciate. See, suppose if I want to purchase a mobile. ठीक है, मैंने आपसे कहा कि चलो भाई मेरे को एक मोबाइल परचेस करना है, तो कौन सा मोबाइल परचेस करूँ. तो इमीडिएटली आपका सवाल क्या रहेगा, सर आपका पहले बजट बताओ, आप कितने वाला मोबाइल परचेस करने वाले हो. तो मैं बताऊंगा कि सर मेरे को 5,000 से 10,000 वाला मोबाइल परचेस करना है. इमीडिएटली नेक्स्ट सवाल क्या रहेगा आपका, सर आपको कौन सा ब्रांड चाहिए, या फिर आपका कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है क्या. तो से फॉर एग्जांपल कोई बंदा रहेगा, उसका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहेगा कि मुझे बहुत ही अच्छा कैमरा चाहिए. कोई बंदा बोलेगा कि मुझे ना गेम्स खेलने हैं तो मुझे रैम बहुत बढ़िया चाहिए. ठीक है, तो कोई बंदा बोलेगा कि मुझे गेम्स वगैरह नहीं खेलने, मुझे मूवीज देखने हैं तो मुझे रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया चाहिए. तो ये क्या हो गया, दीज आर दी स्पेसिफिकेशंस ऑफ एन इंडिविजुअल. तो उस बंदे को वो मोबाइल परचेस करना है तो उसने कुछ अपने दिमाग में फिक्स किया है कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये नहीं देखना है. ठीक है, so this is what is all about specification. On a broader line I am telling you about what exactly specifications are. तो वो specifications हम लोग अगर अभी हमने डिस्कस किया व्हीकल्स के बारे में, हाउ सॉरी मोबाइल्स के बारे में, हाउ इट कैन बी अप्लाइड फॉर द व्हीकल्स. दैट इज व्हाट बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दी थर्ड यूनिट. बहुत ही छोटा यूनिट है, बहुत ही छोटा यूनिट है. मे बी 3 से 4 लेक्चर में ये खत्म भी हो जाएगा. ठीक है, बट हमारे पूरे सिलेबस में सबसे बड़ा, सबसे फास्ट अगर कोई यूनिट है, सो दैट इज द यूनिट नंबर 4, दैट इज द व्हीकल सिस्टम. एक 4 व्हीलर में, एक 2 व्हीलर में जो जो सिस्टम्स है वो सारे सिस्टम्स हमको पढ़ने हैं ये पूरे यूनिट में. तो बहुत ज़्यादा वास्ट यूनिट ये रहेगा. तो दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग. कौन कौन से सिस्टम है, से फॉर एग्जांपल इंजन है तो इंजन में क्या क्या होता है, उसके अंदर एग्जैक्टली कौन सा मैकेनिज्म होता है, एनर्जी कैसे जनरेट होती है. देन सस्पेंशन सिस्टम क्या है उसके अंदर, स्टीयरिंग सिस्टम क्या है, गियर बॉक्स है तो उसमें क्या है, क्लच है तो उसमें क्या है. दैट इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस यूनिट नंबर 4. ठीक है, तो ये हम लोग 4th यूनिट में डिस्कस करेंगे. देन यूनिट नंबर 5, इफ टाइम परमिट्स. अब इसको एक बड़ा स्टार मार्क है. लास्ट ईयर क्या हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड एडमिशंस बहुत लेट हुए थे. स्टिल आई रिमेम्बर कि 15th ऑफ फरवरी उस दिन हमारा इंडक्शन हुआ था, जो आपका कल परसों हुआ, कल शायद. तो उस दिन हमारा इंडक्शन हुआ था 15th ऑफ फरवरी. तो मोस्टली अब हम लोग 1.5 मंथ बिफोर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. तो लास्ट ईयर क्या था, ये यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6 सिलेबस में था ही नहीं. एंड सेमेस्टर जो एग्जाम है उसमें ये दोनों यूनिट्स थे ही नहीं. तो लेट अस होप दैट कि ये यूनिट इस बार रहेंगे और वी विल बी एबल टू डिस्कस दिस यूनिट्स बिकॉज एज वी आर स्टार्टिंग अर्ली. तो हमने ये डिस्कस करने का मौका मिलना चाहिए. ठीक है, तो इफ वी गॉट दैट अपॉर्चुनिटी देन our 5th unit will be based on the manufacturing methods. अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग देखते हैं, डे टू डे हम लोग यूज करते हैं. ठीक है ना,
तो वो कौन से मैन्युफैक्चरिंग मेथड से मैन्युफैक्चर किया होगा वो गेस करना या फिर वो आइडेंटिफाई करना, दैट इज द बेसिक आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। तो उसमें अलग अलग, अच्छा 10 मिनट बाकी, ठीक है। तो उसमें अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स है, दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस यूनिट। देन उसमें कास्टिंग, फोर्जिंग, मेटल फॉर्मिंग, मेटल जॉइनिंग, शीट मेटल वर्किंग, तो ये सारे मेथड्स है। और उसमें अलग अलग मशीनिंग प्रोसेस आती है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन आजकल में जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स यूज करते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर है, वी डू बेसिकली यूज सीएनसी मशीन्स, ठीक है ना, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, फॉर द मास प्रोडक्शन, that we will be seeing in the second part of this particular unit. Then in the last part, which is the most favorite unit of from these particular 6 units, the different mechanisms which are there in our domestic appliances, that is what we are going to discuss. अभी आप लोगों ने जो जो नाम लिए वो सारे हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। रेफ्रिजरेटर, water cooler, AC, then pump, vacuum cleaner, then water purifiers, washing machine, exhaust fan, springs, door locks, gears, watches, प्रिंटर हम लोग डेली यूज करते हैं, जेरोक्स मशीन हम लोग डेली हम लोग वो उसका यूज करते हैं, बट उसके अंदर क्या मैकेनिज्म है कभी हमने सोचा नहीं। देन डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ बेल्ट एंड पुलीज, applications of levers, that is what basically we are going to discuss. तो काफी इंटरेस्टिंग ये यूनिट रहेगा। if time permits we will be discussing this. अच्छा, अब सबसे फेवरेट क्वेश्चन सब लोगों का है, सर हम लोग बुक्स कौन से रेफर करें। अच्छा, तो ये आपका फेवरेट क्वेश्चन आज आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो 6 यूनिट है ना, अच्छा इसको मैं थोड़ा, ये जो 6 यूनिट है ना, ये मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स का अलग अलग सब्जेक्ट है। अभी गेट इट, अलग अलग सब्जेक्ट है। से फॉर एग्जांपल ये पार्ट 1 है ऑफ यूनिट नंबर 1, ये एनर्जी कन्वर्जन ऐसा करके एक अलग सब्जेक्ट है, और वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको एक पार्ट में है इन द यूनिट नंबर 1। देन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, अच्छा ये लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये एक पूरा सब्जेक्ट है। उसके बाद हीट ट्रांसफर ये एक पूरा सब्जेक्ट है। देन 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक और ये व्हीकल स्पेसिफिकेशन, ये अलग अलग 2 सब्जेक्ट है मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए आगे चल के, मीन्स इन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर। देन 2 अलग अलग सब्जेक्ट है ये पूरा यूनिट के लिए, और ये तो है ही नहीं, ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, और ये स्पेशली आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया है। तो हर यूनिट का हर पोर्शन के लिए अलग अलग रेफरेंस बुक या फिर टेक्स्ट बुक रेकमेंड किया जा सकता है। तो इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर योर क्वेश्चन कि सर बुक कौन सा रेफर करूं। कैन यू इमेजिन कि ये कितना डिफिकल्ट है मेरे लिए कि कोई भी एक बुक बताना कि अच्छा आप भाई आप ये बुक देख लो या फिर परचेस कर लो, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो इट इज रियली एंड टफ क्वेश्चन फॉर मी टू आंसर, बट स्टिल ये जो बुक्स है, ये जो सारे जो टेक्स्ट बुक है, इसका भी आप जो स्क्रीन आपके सामने है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप ले लो स्क्रीनशॉट। इनमें से सारे के सारे बुक्स हमारे कॉलेज के लाइब्रेरी में अवेलेबल है विद द गुड क्वांटिटी, तो आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो फॉर एनी ऑफ द टॉपिक, ओके। एंड ऑल दीज आर टेक्स्ट बुक एज वेल एज द रेफरेंस बुक्स। तो जैसा जो टॉपिक रहेगा उसके हिसाब से आप वो बुक रेफर कर सकते हो, ठीक है। नाउ अगेन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सर रेफरेंस बुक तो पढ़ना मतलब बहुत डिफिकल्ट है, वो पूरा का पूरा बहुत बड़ा होता है वो, तो इतना हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो कोई लोकल ऑथर बुक है क्या कि जो हम लोग रेफर कर सकते हैं। तो यस, लोकल ऑथर बुक का एडवांटेज क्या होता है कि बहुत कुछ उसमें मटेरियल दिया नहीं होता है, जो स्पेसिफिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें जो है वो उसमें दिया होता है और इकट्ठा उसमें किया होता है, ठीक है। तो देर आर मेनी लोकल ऑथर बुक्स
उसमें से कौन सा चूज करना है, अगेन इट इज अप टू यू, बिकॉज फ्रॉम द लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको कौन सी लैंग्वेज भाती है या फिर आपको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, उसके हिसाब से आप वो लोकल ऑथर बुक रेफर कर सकते हो। बट एक स्टार मार्क है, डायग्राम्स बहुत बढ़िया होने चाहिए, डायग्राम्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, और वैसे जहाँ पर जिस बुक में होंगे वो बुक आपको रेफर करनी है। फॉर लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, आपको जो भी लैंग्वेज समझ में आती है या फिर जो भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हो वो वाला बुक आप रेफर कर सकते हो। बट फ्रॉम माय साइड आई विल recommend one book, that is this particular book, system. Can you see the this particular file, और या आप देख सकते हो? ओके Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके ठीक है। ऑडियो वीडियो के लिए 2 ही बंदों को अपॉइंट किया है, तो ठीक है। तो सिस्टम्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दिस इज बाय टेक्नियो पब्लिकेशन, एंड I got an opportunity to contribute in this particular book, so I will recommend you to go through this particular book. मैं बोलूंगा ना कि यही परचेस करो, इसको भी देखो, इसमें कि अगर लैंग्वेज आपको समझ में आती है, डायग्राम्स अगर इसमें के कंफर्टेबल आप हो, तो आप इस बुक को देख सकते हो, ठीक है। सो इसका भी अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो। Again, all the textbooks, if you want to purchase, it is available in our college मतलब कॉलेज में अवेलेबल है, कॉलेज लाइब्रेरी से बाजू में एक राहुल बुक शॉप करके है, तो वहाँ पर ये सारे बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। उन्हीं का कुरियर सिस्टम भी है, अगर आप पुणे में नहीं हो, बाहर कहीं हो, तो अगर आपको ये ऑर्डर करना है तो आप उनसे ऑर्डर कर सकते हो। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको शेयर कर लूंगा, आप उनके थ्रू बुक ऑर्डर कर सकते हो। बट आई Hello, होप, sir. यस Sir, I know it's hard for you, but could you tell one textbook, anyone, which is better than others? हाँ, वही तो सबसे डिफिकल्ट सवाल है ना भाई। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये बुक अच्छा नहीं है, ये बुक अच्छा नहीं है। मैंने अच्छा क्या देखना है, हमें हमें देखना है कि डायग्राम्स कैसे है, डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, और वो जिस बुक में है वो बुक आप रेफर कर सकते हो। लैंग्वेज के लिए जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल है वो कोई भी आप टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हो। बट जैसा कि मैंने देखे हैं लोकल बुक्स, तो उसमें अभी ये बुक में मैंने खुद कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ये भी बुक आप क्या करते हैं, कंसिडरेशन के लिए रखो, और बाद में आप देखो कि कौन से बुक के लिए जाना है। आई विल नॉट पिन पॉइंट कि ये बुक लो वो बुक लो, वैसे मैं नहीं बता सकता, बिकॉज इट इज योर चॉइस, आप कंफर्टेबल किस लैंग्वेज से हो, दैट आई कैन नॉट कॉमेंट, ठीक है ना। सो आई होप कि बहुत लोगों का ये डाउट था कि बुक के लिए, तो दैट इज बीइंग आंसर्ड। नाउ वी हैव 2 minutes ओनली, सो यू कैन पोस्ट योर प्रेजेंट इन द चैट बॉक्स, ठीक है। और अगर किसी का कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। Similarly, now I am switching it on. Just a minute. जो ये अटेंडेंस वाला थिंग है वो मैं अभी ऑन कर रहा हूँ, तो ये अटेंडेंस भी आप दे सकते हो। अभी देखो 11:36 हुए हैं, अभी के बाद आप अटेंडेंस देना स्टार्ट कर सकते हो फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स। तो ये 20 मिनट्स तक ये लिंक ओपन रहेगा अटेंडेंस वाला, उसमें से आपको अटेंडेंस देना है, ठीक है। कल भी ये 20 मिनट्स के लिए ये ऑन था, आज भी ये 20 मिनट्स के लिए ऑन रहेगा। यहाँ पे ये ऐसे एक्सेल फाइल बनती है जिससे हम लोग अटेंडेंस मार्क करके देख सकते हैं। 11:02 पे ये ऑन हुआ था, और मैंने बहुत लेट बंद किया इस लिंक को, क्योंकि फर्स्ट डे था। देखो 11:45 तक मैंने रखा हुआ था। अभी देखो यहाँ पे आदित्य पवार ने अटेंडेंस दे दिया, तो उसका 11:37 पे ही अटेंडेंस मार्क हो चुका है फॉर द लेक्चर नंबर 3। वैसे ही आप अटेंडेंस दे सकते हो, ओके। सो दैट्स इट फॉर today's lecture. If in case if you have any doubt, we will discuss in next lecture. Thank you so much, all the best. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, bye. Thank you, sir.